so that all rectangle inscribed in a given fixed circle. This is question number 19 it is. So that given fixed circle the square has मैक्सिमम एरिया। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि एक सर्कल में हम अगर रेक्टेंगल को हम सर्कल के अंदर रखेंगे तो रेक्टेंगल का मैक्सिमम एरिया तभी होगा जब वो स्क्वायर होगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। You must be knowing that a square is also a type of rectangle. Okay, so let us see here. First we'll draw the diagram. In what type problem you must draw diagram before solving. On circle, this is a circle. सर्कल के अंदर में हमें एक रेक्टेंगल ड्रा करना है। ये सेंटर होगा सर्कल का। Let us assume this length of the rectangle is x and breadth is y. Okay, this will be the diagonal here. Straight it will be. Name it A, B, C, D. Let us assume this AB is A. Assume it be A. So using Pythagoras theorem, what we will get? This A is equal to under root x square plus y square. A equal to under root x square plus y square. Also you can say A square equal to x square plus y square. अब हमें करना this is the given things, so that all the rectangle inscribed in a given fixed circle. ठीक है, is not given, circle is given, मतलब सर्कल का रेडियस फिक्स। ओके, so do one thing, better assume this as a radius as A, so this also this A, so this becomes the diameter, so therefore this is A, this is A, so it becomes 2A, therefore this side will be 4A square, 4A square. Okay, radius is given, that is A is given. Now what is asked, what they have asked, the square has maximum area of this rectangle we have to find. So area of A, B, C, D is equal to x into y, therefore अब एरिया को फंक्शन बनाएंगे A equal to x y. Now here x is also variable, y is also variable, so we have to eliminate using this equation. Okay, so we can here eliminate y, so what will be y here? Y will be, see from here, यहाँ से हमें y क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा 4a square minus x square, y equal to under root, see y equal to under root 4a square minus x square. कैन सी यार, यहाँ से क्या हो गया, एक्स स्क्वायर इधर आ गया, तो क्या बचा, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और जो स्क्वायर थे इधर आकर के रूट हो गया,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल टू एक्स इंटू वाई, वाई की जगह पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 4a² माइनस x²। ठीक है, ओके, ये हो गया हमारा एरिया। अब हमें इसे डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। सो ए और डी ए बाई डी एक्स है, ए डैश इज इक्वल टू सी, यू कैन यू भी हम लगा सकते हैं इसमें। सो यू भी लगाएंगे तो क्या, फर्स्ट फंक्शन इज एक्स, सो एक्स इंटू डिफरेंशिएशन दिस विल बी 1/2 अंडर रूट 4a² माइनस x²। Now here differentiation of x² will be, sorry, minus x² will be minus 2x. So here will be minus 2x. ये हो गया u फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेशन सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन अंडर रूट 4a² माइनस x² इंटू derivation of this one. So here we will see this is 2 and 2 will get cancelled out, so remaining will be minus x² upon under root 4a² minus x² plus under root 4a² minus x² equal to, if we take the LCM, what we will get, minus x² plus 4a². See, if we take the LCM, what we will get, minus x² plus 4a² minus x². Now here under root 4a² minus x². Now for maximum area, it should be equal to 0, or not. Therefore you have to write one line for maximum area, a dash should be equal to 0. If we equate this equal to 0, what we will get? So this is equal to 0, this is equal to 0, what we will get? इसे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये बचेगा हमारे पास सिर्फ। सो व्हाट विल गेट, विल रिमेनिंग विल बी 4a² minus 2x² is equal to 0. So again 2 will be common here, so what will get, 2a² minus x² is equal to 0. So therefore here we will get x² is equal to 2a². So from here what we will get, x equal to under root 2a, x equal to under root 2a plus or minus under root 2a. Okay. We got x equal to this one. Now we will substitute this value in the given, that is here y value. If you want to find y, see here y value, if you will square it here, what we will get here, we will get root 2² is 2 only, so 2a². So again here y also we will get. So therefore in this equation, in this, if you substitute the value of x, you will get y also equal to under root 2a. Here this plus minus sign, there is no role actually. Okay, so here what we are getting, x is also root 2a and y is also root 2a. It means you can see, it means this is a square only. Okay, मैक्सिमम मिनिमम हमें प्रूव नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी दिस इज गिवन हियर दैट द स्क्वायर हैज मैक्सिमम एरिया. Okay, another thing what you can do, find a double dash x.
ए डैश जो भी आया है हमारे पास, हमें फाइंड ए डबल डैश एक्स से भी ए डबल डैश एक्स से. Okay, and then if it is positive, if it is negative, see here, if you find a double dash x with a negative value for maximum only. So what we got here, x equal to root 2a and y equal to root 2a, therefore it is a square. Since x is equal to y, therefore the given rectangle is square.